Cancer is known to be a lifestyle disease, and we know in our lifestyle, diet plays a very important part. So there are often people who ask कि वो कौन सी चीज़ है जो खानी चाहिए जिससे कि कैंसर हो ही ना, और जिनको हो जाता है और जो कीमोथेरेपी पे होती है उनको खाने पीने की बड़ी दिक्कत होती है। तो वो चीज़ें जो उनको पहले अच्छी नहीं लगती थी वो अब अच्छी लगने लगी, और जो अच्छी लगती थी वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो इस समस्या का कैसे समाधान होगा? तो इन सारी समस्याएं, कहिए तो समस्याएं को कैसे हम इनका समाधान कैसे ढूंढें, इसके बारे में हमें एक बहुत ही खास मेहमान आज बताएंगे, और वो हैं अर्चना जी। अर्चना जी इज़ अ न्यूट्रिशनिस्ट बाय ट्रेनिंग, and how she got involved with cancer and diet is a very interesting story। और मैं अब चाहूँगी कि ये कहानी आप उन्हीं की ज़ुबानी सुनिए। Thank you, Dr. Geeta. That was a very sweet introduction. And before we go ahead, मैं एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगी कि डॉक्टर गीता के साथ मैं जब 7 साल पहले मिली, there was this very close friend of mine. She was detected with breast cancer and her daughter was a caretaker. What really caught on to me was her passionate interest. You know, in the very first connect, you felt secure. I could see my friend easing out with the kind of apprehensions being put at ease. And this is what encouraged me to, know and understand more about nutrition and doing any kind of course. More than that, this is that real life experience which kind of got me really connected to this subject. आइए अब मैं आपको अर्चना जी के किचन में ले चलती हूँ। वहाँ चल के हम ये देखते हैं कि हमें कौन सा तेल इस्तेमाल करना चाहिए, उसको हमें कैसे स्टोर करना चाहिए, और जो हम आम सीरियल्स इस्तेमाल करते हैं जैसे चावल है, गेहूँ है, उसको हम मिलेट्स से कैसे रिप्लेस करेंगे। और हम ये भी देखेंगे कि कीमोथेरेपी के दौरान हम इन चीज़ों से कैसे पौष्टिक और स्वादिष्ट खाना बना सकते हैं। आइए, फॉलो मी टू अर्चना जी's किचन। Hi, Dr. Geeta. It's such an interesting kitchen. Thank you. तो मैं ये देख रही थी आपके किचन में, जैसे मैं जस्ट वॉकिंग इन, कई बॉटल्स रखी हुई हैं इसमें। सी, तिल का तेल और सरसों का तेल और मूंगफली का तेल। What happens is कोल्ड प्रेस्ड और एक रिफाइंड तेल में 2 तरीके के फ़र्क होते हैं। As you refine a oil, it keeps getting lighter, but it isn't so much in touch with chemicals that the inflammatory properties of the oil goes up. And the whole purpose of an anti-inflammatory diet is to keep the inflammation down. So these cold press oils have minimal inflammatory effects. Yes. Okay. And अच्छा, और ये मैंने ये भी देखा, ये तो घी लग रहा है, ये हाँ. तो cold, ये again this is yes, cold press. Yes. इसकी क्या खास बात है, इस हाँ. घी की क्या खास? देखिए, these are both saturated fats, and there's been lot of misconceptions about saturated fats. Saturated fats are most stable. जितने भी unsaturated fats होते हैं या the ones which are high in omega-6 fatty acids, they are most unstable. They will, there's chances that the free radicals latch on to them, create more inflammation in the body. Okay. All these are chemical free. And ghee से भी जो लोग घबराए रहते हैं, ghee according to Ayurveda is a very important aspect of our diet. It has to be taken. ये गाय से निकाला? ये गाय, और ये A2 है, A2 बिलोना घी. A2 is the protein. Okay. So there's one A1, A2, and A2 from desi gai causes less inflammation. It causes no inflammation. And जब बिलोना कहते हैं, the whole purpose is कि आप इतना अच्छा उसमें से fat separate कर लेते हैं. There is no protein. This is pure fat. So whatever problem is caused is always caused by protein. Okay. So this is having a diet which is rich in good fats keeps the insulin resistance low. So there's a multifactorial advantages of having good quality fats. Small quantities give you more satiety, plus they add to the taste and flavor. And every time that you're told you should not be having fats, you should not be having, keep away from this, that is something which always makes a person feel that there's something not too right about me. Right. When you have everything in moderation, at the right time, in the right combination, in fact you always shed weight. In this lockdown period when I was not moving out at all, I have shed 4.5 kgs.
घर पे बैठ के भी क्या बात घर पे बैठ के और घर का खा के, टाइम से खा के। अच्छा, इसमें कुछ और भी दालें वगैरह दिख रही, पर उससे पहले मेरी नजर अच्छा। ना आपके कुछ और चीजों में पड़ी है। So I can see some, you know, हाँ हाँ। आटा है ये? डॉक्टर गीता, सी द फर्स्ट थिंग विच आई इज बाजरा फ्लावर। ये बाजरा हाँ। है? Okay. और उसके बाद वो बाजरा है। ये भी बाजरा है? हाँ, ये हाँ, भी पिसा हुआ है? हाँ, ये बाजरे का हाँ, seed है? यस। और एंड ये? दिस इज ब्लैक वीट का दलिया। ब्लैक व्हीट का Yes. ओके, हाँ। ओके। और उसके बाद उसके बाद है रागी। रागी है वो? अच्छा, नॉट सूजी, रागी। रागी So these are millets, right? These are millets and a very good combination of बाजरा, रागी and चने का आटा ले लीजिए, कभी पिसी हुई धुली मूंग की दाल मिला लीजिए and put some freshly cut मेथी। पानी तो यूज़ ही करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। हाँ, और उसमें खूब अच्छे से आटा लगा के और A2 बिलोना घी लगा के जब पराठा सेकते हैं ना, नहीं भी भूख लग रही है तो भूख लगाती है। एंड वन सच पराठा विद माय हॉट फेवरेट आलू टमाटर की सब्जी और मे बी गाजर and pumpkin. Since we are talking about an anti-inflammatory diet, pumpkin and carrots come in hugely. Okay. So if we can assimilate around 200 grams of carrots in our daily diet and up to the same quantity of pumpkin, और जैसे मेथी, पालक, बथुआ, सरसों का साग, मतलब जब आपने उसके पत्ते निकालिए, नॉट विद देयर स्टॉक्स, उसका वेट अप टू 200 ग्राम्स अगर आप एक दिन भर में खा लेते हैं, so this forms the basis for a very cancer preventive, not just cancer preventive, I would say any life, any inflammatory, है ना? And we all understand that inflammation is the root cause of Lot of diseases. a lot of diseases. So what are these dals about? Now let me come to these dals also. ये भी बड़े, ये तो राजमा है? This is black beans, Black beans, हाँ, okay. and this is ये lobia, white lobia हो गया? yes, और ये आपके सफ़ेद चने, सफ़ेद चने हो हाँ। गए? ये आया राजमा। yeah, rajma, and they're all boiled. Yeah. They're all boiled and see, now what I normally do is like supposing आपने राजमा एज ए ग्रेवी वाला बनाना है आपको, है ना? आपने एक बार ये राजमा उबाला, I always say eat fresh, but there are ways of doing things and if you store them well, then Storage absolutely, is हाँ, very storage is very important and that temperature difference is what which causes the contamination and the growth of bacteria. So now supposing आपने आज सोचा हम चने बनाएंगे, so you boil chana, immediately once you have cooled them down, put it in a glass bottle, you can keep it for the next day when you make a salad out of it. But probably the best way is that when you boil them, first day use them for a salad, second day probably you could use it for a gravy, and if whatever is left you make atta out of it. Okay. Right, right. एंड दिस वन थिंग, आप एक सफ़ेद चने का या काले चने को आप उसका जब आटा खाते हैं या अगर उबाले हुए का अगर आप उसका आटा बनाते हैं, इज़ अ होल लॉट ऑफ डिफरेंस। आपको उसको खाने को हजम करने में बहुत आसानी रहती है एंड ऐसा लगता है जैसे आप उसमें घी तेल डाला हुआ, इतना भुरभुरा पराठा बन के आता है। जैसे कीमोथेरेपी पे पेशेंट्स होते हैं, उनको उनकी ये हमेशा कंप्लेंट रहती है कि हमसे खाया नहीं जाता। ये चाहते हैं, घर वाले चाहते हैं कि हम ब्रेकफास्ट लंच डिनर जैसे पहले करते थे वैसे करें, तो उनके लिए आपकी क्या राय है? व्हाट इज योर एडवाइस फॉर देम? सी सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी ये है कि हम लोग कीमोथेरेपी में वी हैव टू मेक श्योर दैट द पोर्शन साइजेस आर स्मॉलर। So portion sizes are smaller, but they are nutrient dense, both calorie dense and nutrient dense. Excellent. So I have something which I made, which we can probably, you know, You can show me how Yeah. to do it. Yes. so yeah. So Dr. Geeta, this is something which will work very well for a chemotherapy, a patient undergoing chemotherapy. So दो तीन चीज़ें जो हमने अभी बात की कि कीमोथेरेपी के दौरान the portion size should be such that it is nutrient dense. It looks small, but it gives you the entire, you know, this is जो energy चाहिए, and in fact, it's not an exaggeration that if you pick up around 5 to 6 of these very lightly steamed carrots, and if you have about 2 teaspoons, 3 teaspoons of this, yeah. So this dip has आप जैसे गैस करने में बोले I can't guess for my life, पर ये कैरेट समझ में आ गया। और ये शायद मिंट की चटनी है? हाँ, ये मिंट की चटनी, इसमें आंवला खूब अच्छे से डाला हुआ है। There's lot of garlic, आंवला, गुड़. So just to add a little bit of color while you're eating, this is basically Mahamara sauce. Mahamara sauce. Yes. Okay.
and this is from Syria. I have done my own variations which I'll share with you. Okay. So somewhere this is a hybrid between a hummus and a mahamara sauce. Okay. Okay. This has got roasted walnuts. Roasted walnuts. Yeah. Okay. Very, very nicely burnt out red bell pepper. अच्छा. So what you do? Pepper हाँ, roasted red bell हाँ, yeah, pepper हाँ, हो गया हाँ. और walnuts. Walnuts, okay? So you either do it in a oven or you could even do it over the gas. But वो gas में उसके जब juices गिरते हैं ना तो तकलीफ भी होती है that you are losing out on the nutrition. So what I do is I just use a kind of cookery tin type of thing, cookie tin, put it in there so you can use the whatever the juices ooze out of it. You use that also. Fine. So you have red bell pepper, you have walnuts, and you have some pomegranate molasses. In the sense molasses नहीं, मैं तो उसके बीज निकाल के juice निकाल के, and for a person undergoing chemo I would suggest that very lightly you can warm it. It will not, even if it lose out on a little bit of nutritive value during chemo, what is most essential is that you don't cause any kind of contamination. Right. That's most important. And then there is plenty of garlic. And garlic का maximum फायदा उठाने का तरीका ये है that it should be nicely crushed. Okay. It releases those essential micronutrients into it, which makes garlic such a superfood. Okay. Okay, and so it should be eaten raw. What I have added on to my end is a very up to 3 to 4 teaspoons of dry roasted sesame seeds which I have ground. Okay. So all that you do is, it's very quick. So it sounds like a mouthful, but what you have done is just 5 मिनट आपने वॉलनट को जल्दी से रोस्ट किया, फिर सेसमे सीड्स को रोस्ट किया, बेल पेपर रोस्ट किया हुआ रखा है, एंड आपने गार्लिक एंड नींबू डाले, एंड यू आर डन विद इट. Excellent. So 3. Let me just try Yeah, this. please. Wow. And there's lemon, and I there's can taste the sesame in this. yes, And the lemon too. and the lemon too. Now let me take the reverse. Yes, reverse dairy one. yes, please. I can't stop. तो आज हमने देखा कि वो कौन सी इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमें यूज़ करनी चाहिए अपने खाने में. अब हम आपको बताएंगे कि कौन सी रेसिपीज़ हैं जो इनमें से बनाई जा सकती हैं. तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब इसका नेक्स्ट एपिसोड एयर होगा. बाय फॉर नाउ एंड स्टे ट्यून्ड.